Thank you. Okay. So a lot of people just come thinking about the money, and then when they start reading, when they start doing the practices, they realize the different areas where they can benefit from these practices. And the way the Rhonda Byrne has broken the practices, it is very like she has made it so simple, and she has almost done the hand holding in different areas of the life where people everybody needs some help. Everybody needs some help to leave the negativity and move towards the blessings and the positivity. So let's start the magic money. All the money that we can see in these pictures just make me happy. Gratitude is riches and complaint is poverty by Christian Science Hymnal. So the what I don't know if everybody knows what a hymnal is, but these are a collection of songs and the proverbs that are used in the Christian religion. And it's part of like this particular line is part of bigger songs, bigger proverbs. And what it basically means is gratitude is riches and complaint is poverty. And if you take it a little bit further, whenever you have gratitude, just like we had been talking up until now, whichever area you put gratitude in, you're going to get rich in that area, whether it is relationship, whether it is health, and same is for the money. If we put gratitude for money, we are going to get richer and richer. More blessings are going to come in the area of money. When we are complaining, it leads to the poverty because even last time in the yesterday's chapter also we read at one time every complaint that we do we have to write about or at least say in our mind 10 gratefulness or the thankful gratitudes to nullify that one comment or one gossip or one negative thing that comes out of our mouth. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you. What usually happens is if we know somebody else has bought a new bigger house, new car, somebody else is making more money than us, we get all the negative feelings, envious, jealous, but none of those feelings is going to help you bring money to us because those feelings come from a lack of gratitude. We are comparing ourselves with somebody else, right? That means when we are feeling jealous for somebody, what does it mean? We think we have less. We think we should be getting more. And all those feelings, what it does is basically a complaint. These feelings come from a lack of gratitude for the money you have. I do not have same amount of money as my colleague have, my neighbor has. What does it mean? Even we are not saying, oh, I don't have enough. The meaning of that sentence is what? I have less. I'm lacking. So it's opposite of the gratitude. Complaining about money, arguing, getting frustrated about money, being critical. This is very important, especially from the culture we come from and a lot of other cultures too. It's not just us. Often, when we are little, when we are small, when we are growing up to become adults, we are told, पैसा हाथ का मैल है, पैसा आएगा तो घमंड आ जाएगा, पैसा नहीं है तभी तक अच्छे हो, जैसे ही पैसा आएगा बुरे इंसान बन जाओगे. All of these, like being critical of the money, it's these are all negative feelings. Making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. Because we have learned that, paisa ped pe nahi ugta, and whenever we are sending the same thoughts, the same mindset to even our kids, our friends, our families, these are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve.
it will only worsen because every time we do not have gratitude towards anything, in this particular example, the money, what happens? We have read it before. It is taken from us because we are not thankful. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. We may not have the amount of money in our bank that we want, but if we are not happy, if we are not grateful in our current situation, what does it mean is we are even ungrateful for the money that is in our holdings or in our banks. हमारे घर में जितना पैसा है, we are not even grateful for that. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. So जितना आपके पास है, कम है, आज कम है, कुछ लेना चाहते हो, उसके लिए अभी उतना नहीं है पास में. It's okay. Whatever the amount you have, अगर मानो मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है and I want to buy it on cash, but I only have 50% of the money. गाड़ी 20,000 की है, मेरे पास सिर्फ 10,000 है अभी. I can do two things. Either I can complain कि मेरे पास तो 10,000 भी नहीं है, कम है, मेरे पड़ोस वाले ने तो ले ली, मेरे उस फ्रेंड ने ले ली, मेरे पास ही नहीं है. Either I can do that, or the other option, which is the preferred option, is मेरे पास 50% तो है. जब 50% आ गया तो आगे का 50 भी फटाफट आ जाएगा. It's that mindset that we have to shift to. अपने ही ब्रेन को फिर से ट्रेन करना है. जितना है उसका थैंक यू करो, जितना है उसका ग्रेटफुल लिखो, उसके शुक्राने लिखो. Now this line appears again and again in this chapter under different circumstances. Whoever has gratitude for money, पहले हमने ये पढ़ा था दूसरी situations में, हर situation में same line है. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. अगर आपको मनी चाहिए तो आप मनी के ग्रेटिट्यूड करो, शुक्राने करो. जो है कम है उसके शुक्राने करो. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. अगर खाली फोकस रखा कि मेरे पास गाड़ी के लिए अभी 10,000 कम है, क्या होगा? जो 10,000 आ गए थे, जो 50% आ गया था, वो भी कहीं पे और खर्च वर्च होके खत्म हो जाएगा. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. And this is a very true fact जो रोंडा बर्न ने इतना ही सिंपली लिख दिया है. अगर किसी के पास नहीं है ना, मैंने तो फिर भी बहुत बड़ा एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास 50% है गाड़ी का. मानो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी गाड़ी खरीदने के लिए और मुझे गाड़ी चाहिए, आई एम स्ट्रगलिंग इन द बसेस, ट्रांजिट, ट्रेन्स में जा रही हूँ काम पे या कहीं पर भी. अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, इट्स गोना बिकम वेरी हार्ड कि मैं किस चीज का ग्रेटिट्यूड करूं. मेरे पास तो बहुत कम है, मैं तो मुश्किल से मेरे घर का खर्चा चल रहा है. बट व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज nothing is gonna change if you keep complaining. The situation is only gonna get worse. मेरे घर का, किसी के घर का भी अगर खर्चा मुश्किल से भी चल रहा है, चल तो रहा है, आधा चल रहा है, पौना चल रहा है, जितना चल रहा है उसके शुक्राने करो, उस पे फोकस करो जो हमारे पास है. जो नहीं है उसके ऊपर कंप्लेन करके, जेलसी करके, दूसरे लोगों से एनवियस होकर के, the situation is not going to change. The subject of money can be tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magic money practice. कैसे उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है जब हमारे पास कम है.
It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will continue with the money practice throughout the day. सुबह पढ़ के सारा दिन जो वो हमें प्रैक्टिस देगी वो हमें करनी है. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood. And this is a very beautiful exercise. इसकी सारी एक्सरसाइज में मैं मेरे मुंह से निकलता है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बट एक्चुअली द रियलिटी इज दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल ऑन द डे यू डू इट. व्हाट शी इज आस्किंग यू इज सिट डाउन एंड गो बैक इन योर चाइल्डहुड. हमारा सबसे बढ़िया टाइम हमारा चाइल्डहुड में होता है फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ कोर्स. बट गो टू योर चाइल्डहुड बिफोर बिफोर यू हैड एनी और मच मनी. चाइल्डहुड में क्या होता है सबसे ज्यादा इंसान खुश रहता है मगर उसके पास कोई अर्निंग नहीं होती कोई पैसा नहीं होता. वो घर के लाइक हाउ मेनी टाइम्स हैव वी आल्सो सेड और दूसरे मदर्स से हम सुनते हैं इतने सारे टॉयज खरीद के दिए फिर भी घर के बर्तनों से खेलता है बच्चा. They do not differentiate, and that is our most beautiful time. We do not know what is money. We do not know what is the expenses. नहीं मालूम कहाँ से इनकम आती है, but we enjoy the best. So what she wants is, she wants you to go back to the time when you were a child. Recall each memory where money was paid for you. आपके पेरेंट्स ने आपके लिए पैसे दिए, आपके किसी रिश्तेदार ने आपके लिए पैसे पैसे नॉट दिए सॉरी बट आपके ऊपर पैसे खर्च हुए. आपको कोई गिफ्ट मिला, आपको रहने की जगह मिली, आपको छोटी सी टॉय मिली, आपको किसी ने कोई कपड़े ला के दिए, कोई शूज ला के दिए. ऑल ऑफ दैट, रिमेंबर ऑल दैट. Say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Now examples दे रही है. बहुत लोग बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं समझ में आता. Now look at the examples. Did you always have food to eat? 100%. हमेशा भी नहीं था, majority of the times था. तभी आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब adult हो गए. Did you live in a home? Did you receive an education over many years? Who paid for that education? How did you travel to school each day? बेशक पैदल जाते थे, जूते थे. Did you have school books, lunches, and all the things you needed for school? Notebook, school bag. चाहे वो बेशक एक थैला था बचपन में हमारे पास, पेन्स थे, पेंसिल थे, anything that you needed for the school. Did you go on any vacations when you were a child? किसी रिश्तेदार के ही घर गए. What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Now we realize that with our kids. Every season I have to buy new clothes. Who was buying those clothes for us? Who was stitching those clothes for us? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine? Who took you to the doctor? How did they take you to the doctor? Did you go to the dentist? कभी दांत की प्रॉब्लम हुई? Did you have essential items that you used every day? Toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo. And honestly, sitting here, I have done these exercises many times, but I'm still getting goosebumps reading this list. कितना हमारे ऊपर किसी ने भी, पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, कितना खर्चा हुआ है हमारे ऊपर और आज हम बोलते हैं कि हमारे पास तो भगवान ने दिया नहीं. Did you travel in a car? Even if it was not a car, even if it was a cycle, did you sit back on the back seat जो होती थी साइकिल की, स्कूटर की,
How did you travel? Did you watch television? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने एक आया था टेलीविजन का. आई डोंट नो हाउ ओल्ड इज एवरीबडी इन दिस ग्रुप, but I'm gonna still use that example. Somebody gave me an example. जब हम लोग छोटे थे तो सबके घरों में टीवी नहीं थी. तो बहुत बच्चे पड़ोसियों की खिड़की से टीवी देखते थे दूसरों के घरों में, स्पेशली जब रामायण आता था टीवी पे या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था. आपने किसी पड़ोसी के घर में टीवी झांक के देखी है खिड़की से? इट somebody must be paying for it, right? फोन कॉल्स आपने किए कितनी बार? अगेन, जब हम बड़े हो रहे थे तब होता था कि पड़ोसी के घर में फोन आते थे. सबके घरों में फोन नहीं होते थे. लाइट्स, आप पढ़ते थे, चाहे बेशक स्ट्रीट लाइट के नीचे ही कोई पड़ा है, वो लाइट ऑन होती थी. कहाँ से होती थी? हमने तो बिल नहीं भरा उस स्ट्रीट लाइट का. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पीने का पानी, नहाने का पानी. सो द लिस्ट इज बिग व्हेन यू गो बैक इन दैट स्पेस. जब तक आप छोटे थे, जब तक आपने कोई अर्निंग नहीं की थी, कितनी सारी चीजें मिली. किसी ना किसी ने उसका जरूर पेमेंट किया है, आपने नहीं किया. Rhonda Burns wants you to remember all those things that you got without earning a penny and without paying a penny. And that list is gonna open your mind so much कि it's a different world altogether. अगर मैंने किसी चीज का नहीं पे किया इतनी बड़ी लिस्ट में, how was it given to me? Why was it given to me? Who was giving it to me? All of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. आजकल एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, there are no free lunches, right? Go back to your childhood and apply the same phrase. There are no free lunches. Who paid for all our free lunches back then? And it wasn't a week or a month. It was many years till we started earning some money. Be grateful for every single instance and memory. Because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by the universal law. इस एक्सरसाइज में एक छोटी सी ट्रिक भी है. जो हमारा माइंडसेट है ना, वो ये होता है मैंने कितना अर्न किया, मेरे बैंक में कितना पैसा है. हम हमेशा उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमें मिल जाती है, जिसका हमें पे नहीं करना पड़ता, जो हमें डिस्काउंट पे मिलती है. हमें सिर्फ उतना ही प्राइस याद रहता है जो हमने डिस्काउंट के बाद. मानो अगर किसी चीज पे 20% डिस्काउंट है तो मैंने जो 80% पे किया मुझे वही प्राइस याद है. मैं 24 घंटे के अंदर भूल जाऊंगी कि मेरे को अरे 20% डिस्काउंट कहाँ से मिला मुझे, राइट? सो इट्स ऑल्सो गोना train your mind, this particular exercise, that money doesn't always mean paper bill. Money means anything that you have received, and it can be in any form. किसी ने गिफ्ट दिया, you have received it. किसी ने मेरे लिए पे किया, somebody took me out for a treat, बेशक एक चाय पिलाई, I got it. बिना पैसे के वो रेस्टोरेंट वाला चाय नहीं देगा. So somebody paid for it. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill. आप अपना कोई भी बिल लो and write on a sticker that you place on the bill. आप उस पे एक बिल लो, अपना कोई भी बिल लो, उसके ऊपर एक स्टिकर लो. उस स्टिकर को उसके ऊपर लगाना है बिल पे. क्या लिख के लगाना है? Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill. जिस बिल पे आपने वो अपना स्टिकर लगाया है, we call that magic bill.
It doesn't have to be $1 bill, it can be 5, 10, जो आपकी मन करे. बस एक बिल पे आप वो स्टिकर लगाओ. And then take your magic bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are, again, feelings. जितनी feelings डाल के sincere होगे, and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have your money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, decrease in costs, receive all kinds of material things that would have costed you money. So here is another thing. When we are putting the gratitude for the money and we say that we are going to receive it, we never tell the universe how. How in any circumstance is universe's responsibility. We do not tell, I want $10,000 by somebody giving it to me or by winning a lottery. That's not our job. All we say is, अपने आप शुक्राने करो, आगे का मनी कहाँ से आएगा. गो बैक टू माई एग्जाम्पल. कार लेनी है, 20,000 की है, 10,000 है, 10,000 नहीं है. हो सकता है कार का प्राइस ही कम हो जाए, राइट. कार नहीं बिकी डीलर के साथ में, उन्होंने 50% रिबेट दे दिया. जस्ट एन एग्जाम्पल. हो सकता है मेरे को कहीं से गिफ्ट मिल जाए. So how the money is going to come, we're going to leave it to the universe. Universe has endless ways to meet your needs. And sometimes आप अपनी like इस तरह से सोचो, जब हम इसी एक्सरसाइज को करते हुए when we go back to our childhood, I did not earn any money. Nobody put money in my hand when I was 5 years old, 6 years old, 7 years old. But all my needs were met. चाहे वो किसी पेरेंट्स ने दी, बड़ी बहनों ने दी, बड़े भाई ने दी. नीड्स वर मेट. कहां से पूरी हुई, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. लेट यूनिवर्स फोकस ऑन दैट. After today, put your magic bell in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic bell and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. आज की एक्सरसाइज करने के बाद भी like I always have few magic bills जो मैंने over the years बनाए हैं in my wallet. I have them in a little envelope and I just look at them. Every time I'm writing the money gratitude, I just hold them. I feel the power. So keep it even after today, आज की exercise के बाद maybe keep them with you. Every time you see that little note on the bill, you're going to feel good. You're going to have almost a new trust every day that universe is going to take care of me. आज तक किया, आगे भी करेगा. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. Exactly the same thing. जितने शुक्राने करोगे, जितने gratitude लिखोगे, जितने grateful होगे, जितने thankful होगे, उतना ज़्यादा दिया जाएगा. If you find yourself in a situation where you're about to complain about something to do with money, whether it's through your words or through your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Remember, हर complaint के बदले में how many gratitudes do we have to write? 10. So rather than getting into that cycle,
कि एक कंप्लेन की 10 लिखे, एक कंप्लेन की 10 लिखे। कंप्लेन करते करते खुद को कैच करो, सो दैट हम उस साइकिल में ना फंसे। अपने बिहेवियर से, बोलने के तरीके से, किसी को नीचा दिखाने से। कभी कभी हम बोल देते हैं अपने पेरेंट्स को, तुमने किया क्या हमारे लिए, राइट? गो बैक टू द चाइल्डहुड एंड सी उन्होंने क्या किया। अब हर रोज सुबह ब्रश करते थे, सिंपल थिंग। Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. Do you really want that to happen? I don't think anybody wants that. So try catching, थोड़ा सा खुद को self aware करके try catching, and it is not easy. Like बहुत जल्दी ये जो patterns हमारी लाइफ में बन चुके हैं ना, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम भी अभी भी कभी कभी कुछ कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, जहां से रेट्रोस्पेक्टिव में लगता है अरे ये ठीक नहीं था। बट keep catching yourself, keep fixing your patterns. That's how we make progress. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, सबसे neglected, हर whatever cycle पे आप लोग चलते हो, मैंने काम किया इसीलिए तो दिया है, उनसे पूछो जिनके पास काम नहीं है। जब भी सैलरी आए, कोई रिफंड आए, डिस्काउंट हो मिले, समथिंग दैट समवन गिव्स यू दैट कॉस्ट मनी, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. So, once again, we also have to rewire our brain कि money doesn't mean हाथ में paper bill. Money doesn't mean मेरे बैंक में balance. Money also means मेरे को कहीं से रिफंड मिला, डिस्काउंट मिला, किसी फ्रेंड ने मुझे चाय पिला दी, किसी ने मुझे एक भेज दिया छोटा सा कोई चीज। All of that costs money. Always remember, there are no free lunches. सब चीज के शुक्राने करो, जो भी आपको मिल जाती है, बिना सोचे हुए, बिना मांगे हुए। बट एनीथिंग दैट कॉस्ट मनी, write gratitude for that. Be thankful for them. I keep saying write gratitude, but at least feel the gratitude for those. Magic practice number 5. Number 1 सबको पता है, सुबेरे उठ के 10 लिखने हैं। What आइडेंटिफाई करो, why आइडेंटिफाई करो, फीलिंग्स के साथ लिखो, वापस जाके पढ़ो एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार एंड फील द ग्रैटिट्यूड। सारा गेम फीलिंग का है। Second practice, lot of people, I'll be honest, they even have tears when they do this exercise, and it is good. It is good to have those realizations. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things that you received that were provided at no charge to you. This particular exercise gives goosebumps. ये दिखाता है पेरेंट्स ने कितना किया, जिन रिश्तेदारों ने किया उन्होंने कितना किया। As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. इस एक्सरसाइज पे I would say try to spend time, because it's gonna take you inward, right? इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप मनी के ग्रेटिट्यूड करोगे, आपके ऊपर फोकस मनी का होगा, बट I can almost sit here and guarantee you're gonna also feel the gratitude for all the people that supported you during that time. पेरेंट्स हुए, ग्रैंड पेरेंट्स हुए, बड़े भाई बहन हुए, और कोई रिश्तेदार जिनके पास आप थे। सो आपको उनकी तरफ भी
समझ में आएगा what they really did for us. So it's a twofold exercise in my mind. उसके बाद में क्या करना है? Take a bill and on a sticker, place the sticker on the bill and in big bold letters, write, "Thank you for all the money I have been given throughout my life." Feelings के साथ लिखो. Take your magic bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want. Take it out and hold the magic bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. जितनी बार उसे दिन में उस अपने बिल को, उस अपने नोट को पढ़ सकते हो, पढ़ो फीलिंग्स के साथ. Feel the abundance, feel the abundance, feel the reality that you have a lot. And आज के बाद क्या करना है? Put that magic bill somewhere you will see it every day. To remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. And then just before you sleep tonight, हमारी day 2 की exercise, Magic Rock. Take that in your hand, say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." That's it. That's how simple it was. Okay. We have 2, 3, or at tops 4 minutes. Any question from day 1 until now? Yeah, Sakshi. Yeah, I have a question that keeping the bill and the sticker inside a Ziploc, is it fine? As long as you can see it, like Yeah. all Okay. mine are in an envelope just Uh-huh. to keep them together, Yeah, right. The same way. right? Yeah. Because I thought touching the money to your hands, giving the energy is important, or No, no, no. doing it. Sorry. You can keep it there, but when Yeah. you are reading it, I want you to touch it. I thought you were Ah, only that's what. asking about No, no, the no, keeping, no, no. Because I safeguarding. thought if I put the sticker on the bill, the it can destroy or some No, way. That no. कुछ okay. आप एक बार करके देखो, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. बट वेन यू Mm-hmm. आर रीडिंग इट, टच देखो, आपकी एक सेंस एक्टिवेट होती है वहां पे Ah, जब आप टच right. I करते हो. know. आपकी Yes, आईज भी yes. एक्टिवेट होती हैं. आप जब बोलते हो Mm, उसको, आपके ईयर एक्टिवेट होते हैं. टच करते हो तो एक और एक्टिवेट होती yeah. है सेंस. Mm. Right. राइट. Because I'm writing gratitude for money from 4 5 days, Love it. 108 gratitude every day. Uh-huh. Uh, yeah, but I took the bundle of money and hold in my hands and just doing it, writing and then giving love and thank you to the money Yeah, that way. Okay. yeah. But touch it. Yeah, sure. In my hands. Yeah. Thank you. Yeah, Sunita. Yeah, I have a question. Quickly, I'll ask. Like, number of times this comes. अभी भी this line was there कि for every complaint, think twice. तो जैसे हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं, स्पेसिफिकली जैसे सपोज करो बच्चों को ले गए, तो हम पहले से एक अमाउंट सेट कर देते हैं कि इतने का ही लेना है, उससे ज्यादा का नहीं देखना है. तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. लाइक फिर जब बच्चा देख भी रहा होता है तो नहीं मम्मा ये तो ज्यादा का हो गया. तो इट इज ऑल्सो तो हाउ टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. आई मीन See, you all put the ये तो magnificent महंगा है. outcome. Put the magnificent outcome first of all, हम्म, right? हम्म, You also have to just go back to my example, 20,000 की कार है, right? हम्म, I एक और भी चीज है ना कि आप जब अपना कोई गोल सेट कर रहे हो, यू कैन नॉट ऑल्सो सेट कि भाई, जैसे इन माई केस, कि भाई मैंने लैम्बोर्गिनी ले ली. You also have to think realistically. I'm very honest in that. Think realistically. बट अगर आपका कोई विजन है तो वो हम आगे आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे. अगर मेरा लैम्बोर्गिनी का विजन है, आई कैन पुट दैट आउट टू द यूनिवर्स एंड वर्क विद इट. विजुअलाइजेशंस की टेक्निक्स हैं, वो सारी टेक्निक्स हैं. बट जस्ट इन योर एग्जाम्पल, बच्चों को ले जाओ एंड अगर मल्टीपल थाउजेंड्स की चीज पे बच्चा हाथ लगा देता है, हम्म, right? We still have to bring them back in a positive way. हम्म, So the words are again going to matter there.
But at the same time, we have to also teach them. Where I'm going, Sunita, there is always it's not free for all either at the same time. Yeah, right. Getting it. So choose your words wisely. Don't say पैसे पैसे तो पेड़ पे नहीं लगते हैं वगैरह वगैरह. हाँ, ये तो महंगा But at है, the ये same नहीं बोलना. time, show them the value. Or we can say, we have seen it. Like I have done it with my daughter so many times, and now she's trained. Mm, Let's watch it. Let's wait for a discount. Let's wait for a better price. Let's check out the other stores. But we cannot mm. just make it free. So it's a balancing act there. Okay. Mhm. Thank you. Yeah. Yeah. Uh, And just There's one more add-on, like yesterday we did for health. Same way, we'll take the dollar bill today, and like Sakshi, you can put these sticky notes, so it will not do any harm to the dollar bill. And we'll take the picture and make it the screensaver for today. Sure, sure. Thank you. Thank Okay. That's it from yeah. my side. Thank you. Vrinda, we only got like 2 minutes. मेरा ये क्वेश्चन था दीदी कि जो आपने बोला कि हमें पास्ट में जाना है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, वो हमें सारी लिखनी भी है या सिर्फ सोच के थैंक यू करना है? I would say write it. और Time. इसकी लैंग्वेज क्या रखनी है? ये सेम ही, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर. I'm so thankful for just for the money that is given to me because जैसे जैसे मैं हमेशा लक्ष्मी माँ के साथ ऐड करके लिखती हूँ हमेशा आपको ही, है ना? तो जैसे मैं लिखती हूँ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी वजह से मैंने ये बाय करा, या जैसे छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैंने सुबह के आज लिखे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर लक्ष्मी मैया बिकॉज आपकी वजह से हम कॉस्को से ये टावर फैन लेकर आए, जिससे हमें ठंडी हवा भी मिलती है, इजी टू यूज है, कहीं भी मूव हो जाता है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिकॉज ये भी तो एक नियामत है हमारे लिए. तो फिर मैं ऐसे में ही जो पास्ट की चीजें उसको ऐड करके exactly लिखती हूँ. ठीक है ना? exactly yeah क्योंकि उसमें वो मुझे फीलिंग आ जाती है, मैं कभी yeah लक्ष्मी माँ, कभी कुछ, मतलब उनके ही अलग अलग नामों से उनको लिख देती हम हूँ. हम सब किसी ना किसी को ऐड करते हैं बीच में. हाँ जी, हाँ जी. राइट. तो ये थोड़ा मनी का है, Yeah. तो लक्ष्मी माँ के साथ और थोड़ा कनेक्ट हो जाता Sure. है फिर, Sure. है ना? और जैसे ना ये पहले मैंने पूरी तो नहीं की थी, 10 चैप्टर्स तक किया था, तब ना हमने मैजिक बिल पे नहीं लिखा था, सिर्फ नोट पे लिखा था. बिल पे भी लिखना है, मुझे पता ही नहीं था ये. बी बिल पे लिखो.